Now we want to explain the motion of the particle or the body, suppose. Then we require the physical quantities like position, displacement, velocity, acceleration. तो अब हम सबसे पहले पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस करते हैं. How we represent the position of the particle with vector, then how we represent the displacement of the particle in vector form, right? So suppose one particle is moving in xy plane and it is moving on the curved path as shown in this particular figure, suppose, right? Now at some time t1, suppose particle is at this particular position P. Okay. So here we will take origin of the Cartesian coordinate system as reference point. With respect to that, always we represent the position or the displacement like that. Okay. Now see, here first we prepare the vector connecting point O and P. So this vector OP. So here we can say this vector OP, which we can represent as vector R1. Normally position vector, displacement vectors are represented with symbol R, right? So we can say this thing, vector OP, that is equal to vector R1, that is the position vector of particle at some time t1. ऐसे इसको बोला जाता है, ठीक है. Now suppose at some other time t2, position of the particle is at point Q. अब यहां पे प्रिपेयर करो वेक्टर OQ. So this vector OQ, which we represent as vector R2. So now we can say this thing, vector OQ equal to vector R2, that is the position of the moving particle at some time t2. Now suppose at some time t3, particle is at position R. Now prepare vector OR. So we can say the position vector of the particle OR vector equal to vector R3, that is the position vector of the particle or simply position of the particle at some time t3. Now see here, let's think about the displacement. So if we prepare here vector PQ, right? Now vector PQ, that is the change in position of the particle in time interval t2 minus t1. तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि वेक्टर PQ is the displacement of particle in time interval t2 minus t1. अब सपोज हम वेक्टर प्रिपेयर करते हैं P2R. So we can say vector PR, that is the displacement of particle in time interval t3 minus t1. तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं. So OP vector, that is vector R1, that is position vector of particle at time t1. Clear? वैसे ही OQ वेक्टर, वैसे ही OR vector, then displacement vector, then
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 एंड इट इज इन टाइम इंटरवल t3 माइनस t1। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सो बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। वो एक्चुअल उसका पाथ रिप्रेजेंट नहीं करता है। पार्टिकल ऐसे ऊपर से गया था, हमने ज्वाइन किया इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल पाथ of the object or the particle. It just represent the distance between initial and final position. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो एक्चुअल पाथ ऑफ द पार्टिकल है उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। तो हमेशा ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रिपेयर करेंगे वही पाथ लेंथ हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पाथ लेंथ से कम ही आएगा। ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ वो सेम आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर?